I hope my screen is visible. Yes, ma'am. सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँ उससे पहले हमने रिपोर्ट राइटिंग कहाँ हमें देखने को मिलती है सबसे ज्यादा, अगर आप लोगों ने रिलेट किया हो डे टू डे लाइफ में हम रिपोर्ट कहाँ पढ़ते हैं? मैम न्यूज़पेपर। हाँ, न्यूज़पेपर में और मैगजीन में, स्कूल मैगजीन हो गई या जो मैगजीन्स आती हैं उनमें हम रिपोर्ट्स पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब रिपोर्ट एक, हाँ जी मोहित आपने हैंड रेज किया। मैम आपने रिपोर्ट क्या? मैम आपने रिपोर्ट राइटिंग की जो ये पीडीएफ है शेयर कर रखी है? नहीं नहीं, अभी करूंगी, अभी तो पढ़ा रही हूँ, उसके बाद शेयर करूंगी। ओके मैम। ओके, अब रिपोर्ट जो है किसी भी इंसिडेंट का, कोई इवेंट है, रिपोर्ट हम दो तीन चीजों के लिए लिखते हैं। या तो कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई इनॉग्रेशन हुआ है, कोई इवेंट है, या कोई एक्सपीरियंस जो आप शेयर करना चाहते हो उससे रिलेटेड हम रिपोर्ट्स लिखते हैं। और जनरली रिपोर्ट्स जो होती हैं वो पब्लिशिंग के पर्पज से लिखी जाती हैं, इसलिए हम रिपोर्ट की जो लैंग्वेज होती है, आप लोगों ने याद है, आप लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में रिपोर्टेड स्पीच पढ़ी थी, नरेशन, रिपोर्टेड स्पीच, उसका सबसे ज्यादा यूज हम रिपोर्ट राइटिंग में करते हैं क्योंकि हम सारे इवेंट को नरेट करते हैं। तो इट इज एक्चुअली एन अकाउंट ऑफ द इंसिडेंट, इवेंट or an experience that is to be published, to be shared with the readers. And the a good report is having all the things, and it reflects the language is used in the manner that it shows an eyewitness kind of thing, कि जैसे जो पढ़ रहा है उसको सामने सामने सब कुछ देख के समझ आ रहा है कि क्या कुछ हुआ होगा. Such kind of words are used in a report. And a good report is having three aspects: introduction, complete body, that is reporting, and the proper conclusion. Right? अक्षत बेटा अब आप पढ़ना स्टार्ट करो. मैम ये वाली लाइन है, हाँ, report is टॉप से, a- हाँ टॉप से पढ़ना स्टार्ट करो. A report is a written account of an incident heard, seen, done or experienced and meant to be published about an event that has taken place in the part. A good report must have a good introduction, complete in reporting and proper conclusion. Types of report: newspaper report, school magazine report. Points to remember: use simple past tense for magazine and mixture of tenses for newspaper. Use active passive voice in reported speech. Divide the report in three parts. Part 1: introduction, mention what, date, time, place. Part 2: body, detail of the incident, causes, consequences, effects, guess, steps, activities, people involved with relevant details. Part 3: conclusion, reactions, statements of people, promises by authorities, steps taken. Report in third person. अब देखो सारी पार्ट्स को पहले डिस्कस करते हैं. जनरली जब हम मैगजीन के लिए रिपोर्ट लिखते हैं तो हम क्या टेंस यूज करते हैं? सारा पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस. और जब हम न्यूज़पेपर के लिए लिखते हैं तो मिक्सचर ऑफ टेंसेस. मिक्सचर ऑफ टेंसेस मींस, अब जैसे अगर मैंने किसी इंसिडेंट की रिपोर्ट लिखनी है, एक एक्सीडेंट के बारे में मैंने लिखना है. A 15-year boy is now never going to see the sun again in his life. Means, what is my first line indicating? That the boy has lost his eyes. Yes. So a major accident occurred in Delhi on Punjabi Bagh flyover at so and so time at a busy crossroad, where a high-speed truck collided with a car which lost its balance or which lost its control, and the sufferer was a young boy of so and so school who was admitted to the hospital by the onlookers. See, so I have started with present tense, but I'm taking it to past tense. So we use a mixture of tenses when we are writing for newspaper. Active or passive voice? Active or passive voice in reported speech.
अब रिपोर्टेड स्पीच तो हम सबको पता है, रिपोर्टेड स्पीच सबको याद है. A passerby said that it was a fatal accident. The driver seemed to be drunk. तो अब मैंने क्या किया, मैंने इन्वर्टेड कॉमर्स नहीं यूज किए, मैंने सिंपल उस बात को रिपोर्टेड स्पीच में दैट और पास्ट टेंस लगा के इन्वॉल्व किया. ठीक है. अब पैसिव वॉइस में क्या होता, जैसे मैंने कहा द कार वॉज हिट, तो मैं यहाँ पे क्या कहूंगी, द कार वॉज हिट विद अ ग्रेट कोलिजन. अरे राजा फोन तो किया करे, तेरा नंबर ही नहीं मिलता, मैं परसों भी फोन मिला रहा था. So in this manner we write active or passive voice in reported speech. ठीक है, Now 500 भेजो, ज्यादा भेजो. we need to divide the report into चल, 3 ठीक है, parts. जैसे ठीक आपको है. याद होगा हम आर्टिकल राइटिंग में पहले लिखते थे, पहले इंट्रोडक्शन, फिर बॉडी, फिर कंक्लूजन. इंट्रोडक्शन, we are going to write what, when, where. Yes, what, when, where, what, when, where, and the date. Date, time, everything. Part 2 includes the body, the main details of the incident. What was the cause? What was the result? What was the effect? If there is an event, then who was the guest? Or what were the activities involved, the people involved, all the necessary details. Part 3 is talking about conclusion, where we are talking about the reaction of the people, the statement of the people, or some promise by the authority, some steps taken, whatever it is, we are going to talk about it. And report in third person. What do we mean by third person, boys? What do we mean by third person? One more person was seeing the incident. No. When we are talking about another person, is No. called third person. First person means I or we. Second person means you. Third person means he, she, or it. So we are not going to use I, we, you in our report. हम वो जो सफर कर रहा है मतलब वही. हाँ, मतलब आप कुछ भी उसको कह लो, लेकिन थर्ड पर्सन यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट द ग्रामर, थर्ड पर्सन प्रोनाउन. Yes, he, she, it can be anything. Fine. Okay. Now, we are firstly going to talk about an easier version, school magazine report. Chiransh, are you all right? Now you would be able to read. For today, can I please avoid reading? Oh, no problem. Harshit, beta, please read. Yes, ma'am. School magazine report format. Heading, name of the writer. Newspaper report format. Heading, name of the reporter, date and place. Yes. So in school magazine report, only the heading is there and the name of the writer. For newspaper report, we have 3 things. Heading again, name of the reporter, and date and place. Now there is a fixed format for making it. Yes, Harshit, Yes, ma'am. continue reading better. School magazine report. You are Shweta, head of the History Club of KSN Public School, Janakpuri, Delhi. Your school organized heritage awareness program in your school to create awareness regarding or monuments. Write the report on this program in about 150 to 200 words. Heritage awareness program by Shweta Sahitya. श्वेता और साहित्य, ये दोनों नेम, हाँ एक मिनट बेटा, हमें ये दोनों नेम्स दिए हुए थे तो हमने वो दोनों नेम्स एज इट इज यहाँ पे लिख दिए. आप कोई भी एक नेम लिख सकते हो. यस, कंटिन्यू रीडिंग बेटा. Heritage awareness program was organized by the History Club of KSN Public School, Janakpuri, Delhi on 9th August 2018 from 10 a.m. to 2 p.m. in the school auditorium. The school was well decorated with posters of various historical important monuments. Mr. Deep Dayal, Dean of History Department of JNU, was the chief guest. Around 2,000 students and parents attended the program. The program began by lighting the ceremonial lamp by the chief guest. After that, a skit was presented by the students of class 11.
showing the importance of our heritage and monuments. The History Club presented an engrossing documentary giving a brief detail of 100 monuments from different parts of India. In the end, the uh, chief, chief guest gave a very motivating speech about the role of youth in preserving our national heritage. The principal presented the vote of thanks after which light refreshment was served. Yes. So firstly, we wrote the title. Just below the title, we gave the name of the writer. After that, Heritage Awareness Program, the name of the program, who organized it, where was it organized, when was it organized, the timing as well, and actual place in the school auditorium. The school's preparation were also shown, how the school was decorated and what all was shown. Who was the chief guest? How many students and parents participated? Then the program, how did the program began? What all were the highlights of the program? The History Club, what did they do? And in the end, what did the chief guest say about the role of youth in preserving our national heritage? The principal presented the vote of thanks, and after which a light refreshment was served. Right? तेरे को पता है मैंने 4 बार चलो। पार्टी तो मैंने की ही नहीं अभी कोरोना के अब चक्कर में और next तुझे है मैंने test 3 your बार skill. कॉल ट्राई की है तेरा फोन ऑफ जाता है You are Neha or Narayan, a consultant in J School of तो तेरा Management. घर है तू जब मर्जी You वैसे आ organize a seminar पार्टी on पता Right नहीं to कब होगी। Education Act for teachers and students, in which educationists were invited अरे to talk on हम तो the करा चुके topic, थे हम पहले ही उसके बाद its ही तो मैंने problem check किया था and पहले। implication. Write a report for the तेरा school हाँ, पहले magazine. हवन So here what we are going to include? हाँ सेमिनार के लिए अब हम तो क्या कभी क्या दिखाना, इंक्लूड करेंगे? ठीक है? बताओ अपने अपने पॉइंटर्स, हाँ हाँ बल्कि इंक्लूजन्स को अपने। लास्ट डे वाले जो मैंने देने थे वो 100-150 रुपए वो भी नहीं दिए थे मैंने अभी तक। अरे लास्ट डे जो तूने शाम को 2 चक्कर मारे थे वो भी तो बताओ पेमेंट क्या क्या लिखेंगे हम इसमें? You organize a seminar on Right to Education Act for teachers नहीं and समझा students. कहने का मतलब तेरा अपना घर है तो कभी भी आप मैंने तेरे को 2-3 बार फोन भी किया था तेरा फोन मिल नहीं रहा था चल In ठीक which the educationists were invited to talk on the topic. अब यहाँ पे आपको क्या चाहिए? सबसे पहले आपको क्या सोचना है कि कहाँ पे हुआ? ऑडिटोरियम में हुआ होगा, डेट चाहिए हमें, वेन्यू चाहिए ऑडिटोरियम में, मतलब किस दिन हुआ होगा, ठीक है। एजुकेशनिस्ट वर इनवाइटेड, अब आपको 2-3 अच्छे एजुकेशनिस्ट के नाम पता होने चाहिए, ठीक है। अब राइट टू एजुकेशन एक्ट के बारे में पहले तो सेमिनार का स्टार्टिंग कैसे हुई, वेलकम स्पीच दी, उसके बाद फिर स्पीकर को इनवाइट किया, ग्रुप डिस्कशन हुआ, लास्ट में फिर वोट ऑफ थैंक्स दिया गया, टीचर्स का फीडबैक लिया गया, लाइट रिफ्रेशमेंट सर्व की गई। दिस ऑल विल बी अ पार्ट ऑफ योर रिपोर्ट। नेक्स्ट थिंग, यू आर गीत और गीता, हेड ऑफ हेल्थ क्लब ऑफ GTB स्कूल शालीमार बाग. Your club organized a talk to make students aware about alarming use of chemicals in vegetable and fruits. Experts from medical field and consumer forum were invited to answer the queries of the audience. Write a report for your school magazine. Again, a similar kind of thing. आपको generally जो आती हैं क्वेश्चन पेपर में, मोस्ट प्रोबेबली या तो स्कूल मैगजीन से ही क्वेश्चन आता है जो आपको अटेम्प्ट करना होता है फॉर राइटिंग अ रिपोर्ट। न्यूज़पेपर रिपोर्ट बहुत कम पूछी जाती हैं, और अब की बार जैसे केसेस आ रहे हैं कोरोना को लेके, पैंडेमिक को लेके, लॉकडाउन को लेके, यू मस्ट मींस 90% चांसेस आर दैट यू विल बी आस्क्ड टू राइट अ स्कूल मैगजीन रिपोर्ट हाईलाइटिंग द थिंग, राइट। मैंने एक बार इसका फॉर्मेट वापस बता दो, मतलब दिखा दो। फॉर्मेट में कुछ नहीं है बच्चा, फॉर्मेट में सबसे पहले हेडिंग, फिर राइटर का नेम, और उसके बाद फिर पैराग्राफ्स। देखो पहले हेडिंग, फिर राइटर्स नेम, और उसके बाद फिर पैराग्राफ्स। स्कूल मैगजीन सबसे सिंपल है, स्कूल मैगजीन रिपोर्ट, ठीक है। अब आगे चल रहे हैं न्यूज़पेपर रिपोर्ट, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले आप में से किसी को पढ़ने को कहूँ, सबसे पहले डिफरेंस समझ लो। हेडिंग है, हेडिंग के बाद न्यूज़ स्टाफ रिपोर्टर का नाम लिखा हुआ है,
और उसके बाद रिपोर्ट स्टार्ट करने से पहले डेट और प्लेस, डेट एंड प्लेस आर मेंशन्ड. यस मोहित बेटा प्लीज रीड. Yes, ma'am. Hmm. You are Sanjay or Sanjana, a reporter with the Hindustan Times. You witnessed a fire accident in a crowded market in Delhi. Write a report to publish in the newspaper. Invent necessary details. Fire engulf Central Market. Uh, Sanjay, staff reporter. 10 May 2018, New Delhi. Over 100 persons were trapped for 2 hours when a devastating fire broke out yesterday in the Central Market, Lajpat Nagar, between 5 p.m. and 7 p.m. Though no casualties was reported officially, 50 people were injured. The fire broke out around 4:50 p.m. due to a short circuit in the main line and spread quickly. There was panic and Stampede. stampede as the people rushed out of the overcrowded marketplace. Fire brigade and the police arrived at the venue within the half an hour. About a dozen firemen battled for 2 hours to bring the fire under control. The loss incurred is estimated to be above 5 crore rupees. The injured persons were rushed to the nearby hospital. Many people sustained minor burns. The governor announced an inquiry into the mishap. The police is investigating the matter. देखो यहाँ पे टेंसेस भी हमने कई सारे यूज किए हैं, पास्ट प्रेजेंट सब कुछ हम यूज कर रहे हैं. और यहाँ पे सबसे पहला डिफरेंस, आपको रिपोर्ट राइटिंग आती है नहीं आती, सबसे पहले इसी से पता लग जाता है जब आप हेडिंग के बाद रिपोर्टर लिख के डेट और प्लेस मेंशन कर रहे हो या नहीं. इससे क्लियर हो जाता है कि आपको रिपोर्ट राइटिंग लिखने आती है या नहीं आती. Then we need to be particular about the word limit. I think this time the word limit is around 150 words in the sample paper that has been shared by CBSE. तो आपको कोशिश करनी है, अगर 150 words है तो each paragraph of 50 words or so, right? And you have to make minimum 3 paragraphs. 4 भी हो सकते हैं but minimum 3 होने ही चाहिए. Now apart from this, as Mohit read, firstly we gave the details about the incident, where it happened, what time it happened, whether the casualties were there or not. After that we have given the exact reason, how the thing took place, where the thing took place. तो 120 to 150 वर्ड्स है, तो आप हर एक पैराग्राफ 40 to 50 वर्ड्स का बनाओगे तो आप आराम से उस वर्ड लिमिट को रीच कर लोगे. तो नो कैजुअलिटीज वर रिपोर्टेड. अब कैसे हुआ, किस टाइम फायर ब्रेकआउट हुई, क्या रीजन था, लोगों ने कैसे रिएक्ट किया, फायर ब्रिगेड पुलिस ऑफिसर्स कितनी देर में पहुंचे, एंड हाउ मच टाइम डिड इट टेक टू vanquish the fire. Loss, what was the total loss, the injured persons, where were they taken to, and how is the investigation taking place. Yes Mohit. Ma'am, what is the meaning of stampede? Stampede means वो जो होता नहीं, भाग दौड़ मच जाती है, जैसे ही कुछ होता है तो भाग दौड़ जो मच जाती है, that is called stampede. When people are running without thinking that where they are going, that is called stampede. Uncontrolled running, okay, of the crowd. Fine. Yes, Chalo. ma'am. Let us move further. Now write a report on cleanliness drive recently held in your school. अब बताओ ये क्या है, मैगजीन के लिए है या न्यूज़पेपर के लिए? Magazine. क्या? हम एक बार रिपीट कर दो. Write a report on cleanliness drive recently held in your school. बताओ ये न्यूज़पेपर Ma'am, ये के लिए? magazine के लिए. मैगजीन के लिए नहीं है, ये न्यूज़पेपर के लिए ही है. देखो सबसे पहले, हाँ, रिपोर्ट ऑन क्लेanliness ड्राइव बाय नेहा हेडगल, और सबसे पहले जगह का नाम दिया हुआ है, सर्वोदय कन्या विद्यालय मजलिस पार्क undertook a cleanliness drive during the month of April 2018. Excuse me, ma'am. Yes बच्चा.
मैम ये कॉल पे बता दो कि आपको कैसे पता लगा कि न्यूज़पेपर वाली बेटा है। जो मैगजीन रिपोर्ट्स होती है ना, वो जनरली ऐसी रिपोर्ट्स होती है, तो उनमें स्पेसिफिकली मेंशन होता है, ठीक है। और यहाँ पे भी ये क्वेश्चन थोड़ा सा इनकम्प्लीट है, यहाँ पे भी इस क्वेश्चन में होना चाहिए था कि न्यूज़पेपर रिपोर्ट है या मैगजीन रिपोर्ट है, ठीक है। इसलिए हमने उसको स्टार्ट ही बड़ा ऑब्जेक्टिवली किया है, हमने सीधा प्लेस से ही स्टार्ट किया। सर्वोदय कन्या विद्यालय मजलिस पार्क अंडर टू का क्लेanलीनेस ड्राइव, हमने वहां रिस्क ही नहीं लिया, डेट भी हमने साथ साथ ही नीचे थोड़े से मेंशन कर दी, ठीक है। अदरवाइज बी श्योर कि आपको जो भी क्वेश्चन मिलेगा उसमें आपको लिखा होगा यू हैव टू राइट अ मैगजीन रिपोर्ट और अ न्यूज़पेपर रिपोर्ट, राइट। सर्वोदय कन्या मैम ना तो विद्यालय, यहाँ पे हेड गर्ल लिखा हुआ है, रिपोर्ट लिखना चाहिए था ना, बाय नेहा द रिपोर्टर। हाँ तभी तो मैं कह रही हूँ क्वेश्चन इनकम्प्लीट है ना, तो हम इसको किसी भी तरह से इंटरप्रेट कर सकते हैं कि ये मैगजीन रिपोर्ट है या न्यूज़पेपर रिपोर्ट है, ओके मैम। okay. Sarvodaya Kanya Vidyalaya Majlis Park undertook a cleanliness drive during the month of April 2018 in accordance with Clean India campaign. The school chalked out means planned out, a monthly plan to organize numerous activities such as skits, debates, speeches, poster making, etc. A special drive was carried out on 26 April 2018 to reverberate to the mission of campaigning. Reverberate means to highlight, enlighten. The students took a pledge to clean their school, homes, public places, and surroundings. During the morning assembly, a play on Clean India was enacted to highlight the importance of hygiene, sanitation, and cleanliness. The school principal, along with staff and students, actively involved in the cleanliness drive. They enthusiastically took a broom and cleaned up every nook and corner of classrooms, corridors, school ground, and nearby area. The whole drive was quite inspiring and motivating for the students. The students realized that any work is best done by the person himself. It made the students aware of the dignity of labor. This is for labor name. This is dignity of labor. Now see, a local tour is organized in your school recently. Write a report in 150 to 200 words based upon your experience for the school magazine of your school. You are Namit or Namita of class 11th A. So we have written local tour. You can even write about a tour to Delhi. Yes, by Namit or Namita 11th A. On 9th of October last year, a local tour was organized for all students of school. The students were informed well in advance. They reached the school in time and boarded the assigned buses at sharp 8:30. So we are mentioning each and every process, escorted by their respective class teachers, how the students are taken for a tour. All the steps are mentioned in detail. A sumptuous means very delicious refreshment like light snacks and fruity, etc. was relished. Relish means when you enjoy having something, eating something by the students while traveling. They disposed of the wrappers in the dustbin and kept in buses. All the students were happy and sung songs while making merry. The students were very happy when they reached the first stop, that is Gandhi Smriti Bhavan. They noted the important information in the notebooks that they were carrying. The next destination was Humayun's tomb. The students and the teachers had their lunch in the outer lawns. When they entered the premises, they were taken aback by its sheer beauty. Sheer beauty means extreme beauty. It was a magnificent monument with well manicured lawns. There were fountains amidst numerous small square ponds. It was an extremely beautiful view. The students were then asked by the teachers to form queues again to move to the next spot, that was Rail Bhavan. They had glimpse of journey of railways in India since 1953. It was fascinating. The bus reached the school at 5 p.m. The students were a bit tired but happy. They bade. Bade is the past form of bid. होता है ना, bid a farewell, bid a goodbye. So bid means to give. They bade goodbye to the teachers and moved to their respective homes. Yes, so from the beginning till the end, throughout the whole day is mentioned in these 150 to 200 words. Right? Chalo, before moving on to the next topic, I want
एक सिंपल सा टॉपिक लेते हैं, आप लोग उसके पॉइंटर्स लिखोगे और फिर आप मुझे मेरे साथ शेयर करोगे. Yes, question number 1 only. A very day-to-day phenomena that we see around us. You all are required to write the pointers that you are going to include in your report, and we will discuss that. You may note down the question and then I'll stop sharing the screen. Ma'am, Just a minute, I'm sharing it again. Ma'am, 1 or 2. First question.